We'll be starting with the panel in a short while. Actually, हम हिमाचल प्रदेश के SLCA का वेट कर रहे हैं. So I request everyone to wait a little longer. I request all of the panelists to please kindly open their cameras. I hope I'm audible to everyone. Yes. Yes. A very warm and hearty welcome to each and every one of you to this webinar. My name is Rehan, and I'm very much delighted to have you join us today, as we are going to explore the critical theme of the importance of involving grassroots organizations such as yours in national campaigns, particularly those for drug demand reduction, such as the Nasha Mukt Bharat Abhiyaan, which is the ministry's flagship campaign for drug demand reduction. So the Abhiyaan aims to create a drug-sensitized India by implementing, as you know, a comprehensive strategy that includes uh, aspects such as prevention, treatment, rehabilitation, and enforcement measures. So, as you may be knowing, this is part of a larger month-long series of events, which is aptly themed "Empowering Lives and Inspiring Change" with Nasha Mukt Bharat Abhiyaan, under which uh, the ministry is envisioning a number of activities to discuss various themes around substance use, such as youth activists, educationists, researchers, CSOs, to discuss measures which can be undertaken at their level to propagate the message of the Abhiyaan amongst various target groups that you might be commingling with. So, in the journey towards the Nasha Mukt Bharat Abhiyaan, a nation free from the clutches of substance use, the role of civil society organizations and grassroots initiatives cannot be overstated. These are one of the most important engines of change, so to say. And it is their unwavering commitment and profound understanding of the ground realities that empower them to bring about such transformation at the grassroots level. So today's webinar basically serves as a platform to celebrate and also recognize the pivotal role that these organizations play in our collective pursuit of a healthier and drug-sensitized India. So as we listen to the voices of the esteemed speakers and panelists, let us try to remember that change is not merely a distant dream. It is a series of determined steps that we as a society take collectively. So let us absorb the wisdom shared here today and let us pledge to carry it forward, because every effort, no matter how small, contributes to a larger unending fight for a better nation. So without any further ado, let us start off with the session for today's event. It is the first session. In this segment, we will be discussing the various importances of involving organizations and grassroots organizations in national campaigns, uh, as well as the roles and responsibilities of our grantee aid organizations, uh, so that they can become an integral part of the Nasha Mukt Bharat Abhiyan. For this, I would like to call upon Mr. Adarsh Tripathi, who is a senior state coordinator at the ministry. Over to you, Adarsh. Thank you, Rehan. Am I audible to everyone? Yes, Yeah. sir. I hope my screen is visible. Great. So, continuing on Rehan's words, like we all
are very, very comfortable with the idea that the journey towards a drug sensitized India is not the one that can be undertaken by any one single entity or institution alone. It is a collective effort that requires involvement, dedication, and synergistic collaboration of various organizations across different sectors. We have NGOs, community groups, educational institutions, private sector entities. They all bring their unique set of skills, resources, perspectives that collectively propel the campaign forward. The synergy that is created by such collaborations not only magnifies individual efforts, but also inspires others to join the movement of Nasha Mukt Bharat Abhiyaan, movement of making a Nasha Mukt society. So it showcases that the desire for a Nasha Mukt society is a unifying force that transcends boundaries, ideologies, and backgrounds of all our individual entities. Now, coming to the presentation, uh, I will try to make this conversation in both Hindi and English. Uh, so let's move forward. As we all are aware that Nasha Mukt Bharat Abhiyaan or Drug Free India campaign was launched on 15th of August 2020. So why did we launch such a big campaign at national level? Because on the first time in India, we had a first ever national survey on extent and pattern of substance use that was conducted by our ministry in 1819. And in the report, we received some surprising uh, remarks. Like the first one, you can see here, it's approx 73 million people, substance users were identified based on the survey. We identified that around 5.8 million of women are users of some types of substances in India, mostly use the cannabis. Then we also found a very shocking point that we also had around 12 million child users in India. So these were some dire circumstances that were necessary for bringing or launching such a national campaign. Now moving forward, uh, on the side of drug demand reduction, we have major focus areas. First, obviously, primary prevention, then treatment and social integration. Integration of people who were connected or who were involved in substance use in any way. Our outcomes that we look after are mass awareness on social, health, economic aspects of substance use. We want to work towards destigmatization of substance use and substance users. We wish to promote the health seeking behavior among users and dependents, also reforming through the social and community work involvement, especially while we all work for rehabilitation and treatment of our users rather than the punishment approach. So coming to India's policy, that is from our ministry, which is conducting mass campaigns, like we have Nasha Mukt Bharat Abhiyaan to create awareness on substance use. We have preventive education approach. We work to reduce stigmatization, as we earlier discussed. We work for identification, counseling, treatment, and rehabilitation of substance users, as well training and capacity building of providers. Now, some stats from NMBA reach out. We have covered more than 2.4 crore people. We have 55,000 plus educational institutions covered, 29 plus lakh women covered, 1.17 crore youth covered, and around 30,000 plus activities being conducted. Coming to online training of substance use, we have a portal, Tapas portal, that is an online learning management program by our ministry. Tapas portal has course on substance or drug abuse prevention. It has 12 modules, as you can see on the screen. It works about identifying signs and symptoms of harmful effects of drugs, management of different types of disorders, life skills, workplace prevention, and many other necessary modules that are required to learn about substance abuse prevention. Now, Mission Navchetna. Mission Navchetna is a new initiative by our ministry. It is for sensitizing students from the age of 11 to 16 years, teachers, their parents, and drug dependence related strategies and life skills.
So we have nine Navchetna segments. Four are for children from class 6 to 8. Then four are for 9 to 11. One is for parent. We have very basic topics covered in that, like living and eating healthy, learning about drugs, managing peer pressure, drug related information, both in basic and advanced. And we wish to cover 10 plus lakh teachers and 2.4 crore students across the country from Mission of Chetna. As we all are also aware about our national toll-free de-addiction helpline, 14446. 14446 is very important because the caller can get anonymous services. They don't need to disclose their personal information to be identified. They can get information on primary counseling. On that, they can also receive assistance in locating nearest de-addiction facilities that are funded by our ministry. And it can also be used for sharing intelligence on sale of narcotic substances. So the mechanism has been built to share the information received with NCB in if any such information comes with our helpline. Now, the educational institution related programs, as we earlier discussed, we have covered around 56,000 plus educational institutions. You can see in different states like Bihar, Mizoram, Uttar Pradesh, many institutions are becoming drug-free institution. Nasha Mukt clubs are being formed. Navchetna modules are also in the process of being implemented in such institution. Many activities are being covered on the theme of substance use. We also have university collaboration. We have collaborated with some of the prominent universities like KAIST, Vellore Institute of Technology, Manipal Academy of Higher Education, Bhopal School of Social Sciences, and many such institutions or universities have also formed youth clubs, student groups. They also adopt slum or villages in their vicinity so they can take up programs on substance use. They conduct training for service providers, youth volunteers, and such clubs who are working in the field of substance use. Uh, the hotspots are some of the slums or villages which may be having prominent use of some types of substances. So in such hotspots, some youth clubs are started of and youth are trained within the community. Women joint liability groups are formed. Community radio, community theaters, they are utilized for showcasing our movies and clips and other informative content. Some community champions are also identified so they can be trained to take the campaign forward within the community with their very unique understanding of the needs of the community. Now, social media use and youth intervention. On social media, as we are very, very active on social media, we actively share many posts related to NMBA updates, sometimes some memes, some activity posts happening across the nation. We have shared more than 63,000 plus posts. We also have some students who become part of an MBA as intern. They also uh, share the information that they learn about while working with an MBA, with their community, with their peers. NMBA website and portal, we have an active NMBA website. As you can see, the dashboard is very active on NMBA website. Is uh, it is usually live update from the field whenever any activity happens and it is uploaded. It gets the live update. It has IC material available that can be used for sharing best practices. It has newsletters. We have monthly newsletters. We also have a take up pledge section. That section can be used by citizens and recovered substance users so that they may take the lead of NMBA forward in their community. We also have expert forum and discussion page. In that expert forum, we have some frequently asked questions from our experts of different prominent institutions, and they have some prominent they have expert advice on such questions. You can also ask new questions if you wish to.
We have NMBA mobile app and dashboard. So NMBA mobile app is developed to collect the information from all on-ground activities. We have the master volunteers and district officials. They feed the data on NMBA, and any collected data that is collected from the NMBA app, it is represented on real-time basis on the dashboard in the last slide that we saw. Now, there are some snapshots of activities taken up in identified hotspots. We can see that in community, some type of Nukkad Natak or some alag community activities are being organized. Um, at the very top left, you can see drug-free village is also being declared under Nasha Mukt Bharat Abhiyaan. So you can see that at the community level, a lot of activities can be undertaken. Now coming to youth programs, in Jammu Kashmir, Sikkim, Uttar Pradesh, Manipur, we have so many activities organized, and a lot of photos are being shared regularly on our social media platforms also. We have 1.1 crore 1.1 crore youth associated, 300 plus social media interns, peer group programs are also available. We have women programs, activities led by Mahila Mandals. You can see from the photos. Then there are door-to-door awareness drive by Ajivka Didis. Then we have community programs, citywide campaign, Nukkad Nataks. Now coming to treatment and rehabilitation part. As we are aware that our ministry funds treatment and rehabilitation facilities across the nation. So coming to the augmentation of de-addiction facilities, we primarily focus on counseling, treatment, and rehabilitation facilities. We have primary screening, medical treatment, counseling for individual and group, recreational activities, family, and follow-up for all our beneficiaries. So for residential part of treatment facilities, we have three major type of facilities: IRCAs, Integrated Rehabilitation Center for Addicts. We have ATFs, Addiction Treatment Facilities. We have DDACs, District De-Addiction Centers. So they all such facilities are being operated across the nation, covering almost all the districts to provide necessary treatment and rehabilitation support. Now, coming to this, we also have geotagged. We also have geotagged all of our funded facilities that is available on our Nasha Mukt Bharat Abhiyaan website. You can go and check it out. Now, as we discussed earlier, uh, the importance of involving our civil society organization in national campaigns. So we can see we have some major important role of organizations. Because organizations are deeply embedded in local communities, the local reach and connectivity they have, the better understanding of specific challenges of each region, the trust and rapport with local population they have, it makes their communication more effective. GIAs are better suited to have influence in unreachable areas of communities. They have cultural, linguistic, and social economic diversity. So they can target messages that resonate with local population. For community engagement, obviously GIAs possess the ability to engage community members actively. They can organize events, workshops, and many other activities that will be helpful to raise awareness and discourage substance use. Coming to early prevention, GIS can hold counseling camps, door-to-door interventions, and different strategies to mobilize the reach out and generate preventive measures. Data collection and feedback is a very important activity that can be undertaken by GIAs because they have a database of ground level realities. They can collect vital data on substance use trends, patterns, and local challenges. Such feedback can be helpful in refining national strategies and policies. They can also be helpful for promoting grassroots leadership to gain recognition and expertise in substance use prevention activities. Now coming to sustainability of initiatives. So the campaigns at local level need long-term commitment, and grassroots organizations can ensure that anti-drug initiatives can continue as a mission for long term. Fostering unity. So a national campaign needs
that involvement of grassroots organizations to form a sense of unity and shared purpose. And that would also help us achieve a common goal of united India against substance use. Now, what can be your role as a GIA? So, as GIA, many smaller sub campaigns can be undertaken within your district. So, NMBA is already running multiple chapters that are run by many organizations like Brahma Kumari's Art of Living at different areas of the country. GIAs can also reach out and cover the local areas within their target population and create impactful sub campaigns. Now, for assistant to implementing agencies or working with district administration, GIS can actually become a partner with district administration in conducting NMBA and such substance use prevention related programs at district level. Now coming to the third year of anniversary of NMBA, all the districts across the nation have been undertaken under the purview of NMBA. So we would request all of you to please help out your district administration in organizing such events. Uh, Especially GIAs have a very strong approach in resonating with local target audience with messaging in local languages. So they can frame messages that align with the goals and values of NMBA. They can also reach out community groups, educational institutions. The capacity building of youth, healthcare, professional educators, that is very important. So GIS can provide training and capacity building programs for healthcare professionals, educators, and community leaders for effectively addressing drug related issues. We also have the online tapas modules that we earlier discussed. You can also utilize on these modules to build on knowledge. They can also collaborate with other NGOs who are working in the field of addiction recovery, mental health, and community development. So the expertise in organizing such support groups, counseling, and rehabilitation programs is very helpful for leading the message of NMBA forward. Now, we can also partner or establish partnership with local communities, youth clubs that are being formed with NMBA, or you can also initiate the formation of youth club in your neighborhood organizations that can run awareness campaigns, workshops, and other events. Now, now very specific further role that can be taken by GIAs in spreading message or information about our de-addiction helpline number 14446 and NMBA website. So GIAs can spread this vital information and also publicize the NMBA website, which gets updated with latest documents, reports, and other IC material, which can be helpful for people. Now, GIS should also document the activities which they have undertaken. So it can be showcased as part of campaign initiatives. And if found innovative, such activities can also become best practices for all other NGOs across the country. We also have a lot of IC material available. However, GIS can also utilize that IC material by converting into local language or maybe adding local trends so that it may resonate with the local population. And most important, we organize many online events. So we would like to share our GIAs, their thoughts, so they can become the part of our current narratives. GIA should actively participate in such events. They can involve project coordinators, counselors, beneficiaries, so we can share the narratives of success stories with all of our audiences in mass. I sincerely hope that the information today that we are sharing through this presentation or from today's discussion will be helpful to all our civil society organizations who are connected with us today. Thank you. Please unmute yourself. We are not able to hear you. Oh, I apologize. Thank you so much, Adarsh.
for this insightful presentation. And I also hope our panelists and also the people viewing us on Facebook found something of value from this presentation. So next up, we have the second segment of this panel discussion, which is the discourse with the state level coordinating agencies. These are basically organizations that the government has chosen to collaborate closely with other GIAs, NGOs, educational institutions, leveraging their expertise to design and conduct comprehensive training programs for the hundreds of GIAs that are supported by the ministry. These initiatives equip professionals and other volunteers within those GIAs and also other organizations, and as well as the state machinery, with the skills and insights as well as strategies that are necessary to effectively address the complex challenges posed by substance use and its prevention. By fostering a culture of continuous learning and growth, these agencies empower individuals and organizations at the grassroots level. These organizations have also worked extensively with the Nasha Mukt Bharat Abhiyaan. They have engaged with Nasha Mukt Bharat Abhiyaan since the beginning, and they have played a very significant role in the implementation of the Abhiyaan at the grassroots level. Therefore, the next segment of this session will delve into this area, and we'll try to understand how this participation process has been carried out and how it can also be made even more effective. So for that purpose, we have 4 SLCAs with us from 4 different states who will be taking the panel now. But before that, I request the panelists to start their presentations with a brief introduction about themselves, as well as the organization they are representing, so that our viewers may get to know you and your work a bit better. So we'll begin with Mr. Vijay Kumar, who comes from Gunjan organization, which is the SLCA for Himachal Pradesh. So, sir, over to you. Sir, I apologize. I'm audible? Yes, sir. Yes, sir, you're audible. Okay, Please good. go. सभी पैनलिस्ट को नमस्कार, अभिवादन। मैं विजय हूं और गुंजन ऑर्गेनाइजेशन हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक रखता हूं। गुंजन ऑर्गेनाइजेशन तकरीबन पिछले 20 सालों से सब्सटेंस प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के एरिया में काम कर रही है, और इसी डायरेक्शन में गुंजन ने एक इनिशिएटिव लिया है जो नशा मुक्त भारत की बातचीत की जा रही थी। उसी लाइन में एसएलसी हिमाचल प्रदेश ने यानी गुंजन ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ते हुए एक इनिशिएटिव लिया है कि जो कंसर्न्स हैं नशा मुक्त भारत के, और उन कंसर्न्स को लोकल एरिया के स्पेसिफिक टेलर मेड अप्रोच में हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, और वही एक मॉडल अप्रोचेस हमने शुरू की है जो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। मेरी स्क्रीन विजिबल है क्या? Yes, sir, it's visible. ओके। सो जिस मॉडल अप्रोचेस को हम आपके सामने रख रहे हैं उसका नाम नशा मुक्त ऊना अभियान है। नशा मुक्त ऊना अभियान एक तरह का नशा मुक्त भारत अभियान से इंस्पायर होकर डिजाइन किया गया है, और उन एरियाज को हमने टच करने की कोशिश की है जो कहीं ना कहीं इग्नोर्ड रह जाते थे। इस अभियान को कंसेप्चुलाइज करने के पीछे जो फैक्ट्स रहे हैं वो हिमाचल प्रदेश के आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। इनफैक्ट अगर हम पूरे देश की बात करें, बढ़ता हुआ नशा अपने आप में एक बड़ा कंसर्न है, और हिमाचल प्रदेश भी उसे अछूता नहीं है। हिमाचल प्रदेश का जो जिला ऊना है पंजाब से लगता हुआ बॉर्डर है, और बहुत ही वनरेबल जिला है। उसी में अगर हम देखें तो पिछले 5 सालों में हमने नोटिस किया है कि हिमाचल प्रदेश में और ऊना जिला में खास करके नशे का जो सिनेरियो है ज्यादा चिंताजनक होता गया है, ज्यादा विकराल होता गया है। और अगर हम सब्सटेंसेस की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में 5 सालों में जिस तरह से हीरोइन का इस्तेमाल बढ़ा है वो अपने आप में बड़ा चिंताजनक है। अभी इंडिया आउटलुक की रिपोर्ट आई है और उसने बताया है कि हिमाचल प्रदेश में ओवरडोज के कारण जो सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं वो ऊना जिला कांगड़ा और जिला सोलन, शिमला और कुल्लू में हो रही हैं। ये अपने आप में बड़ा कंसर्न है जो हमको इस तरह की स्पेसिफिक अप्रोच चलाने के लिए एक तरह का आगे बढ़ाता है। अगला सिनेरियो जो बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हमको स्पेसिफिक अप्रोच के लिए आगे बढ़ाता है, हिमाचल प्रदेश की जेलों में जितने इनमेट्स बंद हैं उसमें 40% ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं एनडीपीएस एक्ट में या इस तरह के डीलिंग में
इंडल्ज पाए गए हैं। चिंता की बात यह है कि सिनेरियो बहुत चिंताजनक है, लेकिन इस सिनेरियो को डील करने के लिए हमारे पास मैकेनिज्म कोई नहीं है अगर हम नशा मुक्त भारत अभियान को हटा दें। इसी लाइन पे आगे बढ़ते हुए हमने एक बेसलाइन स्टडी की है, क्योंकि अभी तक जो हमारा सब्सटेंस यूजिंग का सिनेरियो है, वो जो मिनिस्ट्री ने एक सर्वे किया है 2018 में, उसके अलावा हमारे पास कुछ भी ऐसा एविडेंस नहीं है जिसके बेसिस पे हम स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी को या कैंपेन को डिजाइन कर सकें। हमने ऊना जिला में, और जो डाटा हमारे सामने निकल के आया है जो नेशनल सर्वे का है, वो एक तरह का सब्सटेंस यूजिंग पैटर्न की बात करता है, लेकिन हमने वल्नरेबिलिटी फैक्टर को अंडरस्टैंड करने की बात की है। और जो ट्रेंड निकल के आए हैं वो आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूँ। स्पेसिफिकली ऊना का है, लेकिन ट्रेंड हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के ट्रेंड हैं। उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे ऑलमोस्ट 91% जो एडोलेसेंट्स हैं वो एक्सपोज्ड हैं सब्सटेंस यूज के लिए, और उसमें भी बड़ी थोड़ा सा चिंता की बात है कि 30% इंडिविजुअल, जिसे हम इलीगल ड्रग्स कहते हैं, हीरोइन कहते हैं, उसके साथ एक्सपोज्ड हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर और जो निकल के आया है कि जो एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे हैं, हर 10वां बच्चा उसका कोई ना कोई दोस्त ऐसा है जो सब्सटेंस यूज कर रहा है। और इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि बच्चों का जो ओपिनियन है सब्सटेंस यूज को लेकर, मेजोरिटी जो एडोलेसेंट्स हो ये मान के चलते हैं कि सब्सटेंस यूज करने से एंजॉयमेंट मिलता है, प्लेजर मिलता है, या स्ट्रेस दूर होता है। तो ये अपने आप हमारे जो एडोलेसेंट्स हैं उनको रिस्क में लेके आता है, वल्नरेबिलिटी में लेके आता है। इंपॉर्टेंट फैक्टर ये निकल गया है कि मेजोरिटी स्टूडेंट ऐसे थे जो ऑलमोस्ट 15 से 20 इंडिविजुअल को जानते थे अपने आस पड़ोस में, अपने एनवायरमेंट में, जो कोई ना कोई सब्सटेंस यूज में इंडल्ज है। उससे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि 30% इंडिविजुअल ऐसे हैं जिनको बच्चे जानते हैं वो हार्ड ड्रग्स को इस्तेमाल करने वाले हैं, यानी टोबैको या अल्कोहल के अलावा जो बाकी तरह की सब्सटेंसेस हैं उनको इस्तेमाल करने वाले हैं। एक अलग जो फैक्टर निकल के आया स्टडी में जो हमने की इन बच्चों के साथ, वो ये कि ऑलमोस्ट 16% जो मेल एडोलेसेंट्स हैं उनको कभी ना कभी सब्सटेंस ऑफर की जा चुकी है, यानी वो ज्यादा खतरे में है, ज्यादा वल्नरेबल है। और इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जिनको भी ये सब्सटेंस ऑफर की गई है, मेजोरिटी 50% उनके दोस्त हैं, उनके पेयर्स हैं, जो उनको सब्सटेंस ऑफर करते हैं नशा करने के लिए। एक और फैक्टर जो निकल के आया है कि सब्सटेंस यूज जो है वो मेल्स में ज्यादा है कंपेरेटिव टू फीमेल। जब हम नशा मुक्त भारत की बात करते हैं और सिमिलरली हम नशा मुक्त ऊना की बात करते हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी निकल के आता है कि हमारा एनवायरमेंट कैसा है, हमारे फैमिली या हमारे आस पड़ोस का एनवायरमेंट कैसा है। चिंता की बात है कि 38% इंडिविजुअल ऐसे थे, टीनेजर ऐसे थे जिनकी 38% फैमिली में कोई ना कोई नशा करने वाला व्यक्ति अवेलेबल है। एक और जो फैक्टर निकल के आया है कि अगर दो तरह के लोग हैं, एक इंडिविजुअल ऐसे थे जिनकी फैमिली में नशा होता है, दूसरे ऐसे जिनकी फैमिली में नशा नहीं होता है। फैक्टर ये निकल के आया कि जिनकी फैमिली में कोई ना कोई व्यक्ति नशा करता है उनमें रिस्क डबल टाइम है, और बहुत सारे इंडिविजुअल ऐसे हैं जो नशे में कहीं ना कहीं इंडल्ज हो गए। एक और इंपॉर्टेंट स्टडी में जो निकल के फैक्टर आया है वो ये कि 30% इंडिविजुअल ने ये माना है कि अगर उनको नशा ऑफर किया गया या किया जाता तो मना करने की स्थिति में नहीं है, वो ना नहीं कर पाएंगे। और ये सारा के सारा सिनेरियो हमको ये बताता है कि नशा मुक्त भारत अभियान को अगर हम वाकई में प्रिवेंटिव मोड में लेके जाना चाहते हैं तो हमको कुछ टेलर मेड या नीड बेस्ड स्ट्रेटजीज डिजाइन करनी पड़ेगी, जिसको लेके हमने नशा मुक्त ऊना अभियान को कंसेप्चुअलाइज किया और उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की। और उसी में ही एक सिनेरियो और निकल के आया, 6ठी क्लास से 12वीं क्लास के बच्चों ने ये भी बताया कि उनका प्रेफर्ड, अगर कोई सोशल मीडिया में 80% बच्चों ने बताया कि वो सोशल मीडिया को यूज करते हैं, और तकरीबन इतने ही % बच्चों ने ये बताया कि वो इंस्टाग्राम में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, इंस्टाग्राम को यूज करते हैं। ये सारे का सारा सिनेरियो ऐसा था जिसके बेसिस पे हमने एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी डिजाइन की और एक स्पेसिफिक कैंपेन डिजाइन किया, एक स्पेसिफिक जिला को लेके, और जिला ऊना है। पूरे जिला ऊना के लिए एक अभियान कंसेप्चुअलाइज किया गया है और उसका नाम नशा मुक्त ऊना अभियान, नशा मुक्त भारत की ही तर्ज पे इसको डिजाइन किया गया है, लेकिन इसको हमने कॉम्प्रहेंसिव बनाया है और जो फैक्टर नीड में निकल गए हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश की है। और हम नशा मुक्त ऊना अभियान की बात करते हैं और इसकी स्ट्रेटजी क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, उसकी बात करने जा रहे हैं। अब ये अभियान बाकी अभियान से अलग क्यों है? अगर हम ट्रेडिशनल मॉडल की बात करते हैं, हम जनरली एक्टिव बेस्ड अप्रोचेस की बात करते हैं, लेकिन नशा मुक्त ऊना अभियान जो है एक तरह का वेल डिजाइंड और पूरे 1 साल का कैंपेन है, ताकि हम सस्टेन्ड और रेगुलर मैनर में बच्चों के बीच या कम्युनिटी के बीच में काम कर सकें। ट्रेडिशनल अप्रोचेस की अगर हम बात करें, हम जनरली अवेयरनेस कैंप अप्रोच में काम करते हैं, लेकिन नशा मुक्त ऊना अभियान जो है स्कूल इंटरवेंशन, कम्युनिटी इंटरवेंशन की बात कर रहा है और रेगुलर मैनर में बात कर रहा है। अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करते हैं, हम स्केल्ड अप्रोच में बात करते हैं, लेकिन एनएमई मॉडल जो है वो लाइफ स्किल डेवलपमेंट की बात करता है, एनवायरमेंट फैक्टर को डील करने की बात करता है। ट्रेडिशनल मॉडल में जब भी हम जाते हैं, हम लेक्चर बोर्ड में बातचीत करते हैं, लेकिन एनएमई मॉडल जो सिस्टमैटिक और सस्टेन्ड एक्टिविटीज के थ्रू अपने काम को, एक्टिविटीज को आगे बढ़ा रहा है। ट्रेडिशनल मॉडल में हम प्रीच या स्पीच मॉडल में बात करते हैं, जो पर्सनल का इंडिविजुअल कंटेंट होता है उसके बेस में बातचीत की जाती है, लेकिन जो नशा मुक्त ऊना अभियान का मॉडल है वो नीड बेस्ड मॉडल है और
कंटेंट और मॉड्यूल बेस्ड कंटेंट मॉडल है। इसमें मोरालिटी की बात नहीं की जाती है, इसमें ब्रेन साइंस के ऊपर और हेल्थ इश्यूज को हम एड्रेस करने की बात कर रहे हैं। ट्रेडिशनली हमारे पास इन सारी चीजों को डील करने के लिए, इश्यूज को डील करने के लिए कोई सर्विस डिलीवरी नहीं थी, लेकिन नशा मुक्त ऊना अभियान का जो मॉडल है उसमें हम मेडिकल सर्विसेज की बात भी कर रहे हैं, हम काउंसलिंग सर्विसेज की बात भी कर रहे हैं, हम सोशल सपोर्ट की बात भी कर रहे हैं। अब इस अभियान के कंपोनेंट क्या है? सबसे पहला कंपोनेंट स्कूल इंटरवेंशन है। दूसरा कंपोनेंट, क्योंकि हमारी ज्यादा वल्नरेबल पॉपुलेशन स्कूल में पढ़ने वाली है, 6ठी से 12वीं क्लास वाली है, और जब हम प्राइमरी प्रिवेंशन की बात करते हैं, यही वो टारगेट पॉपुलेशन है जिसके बीच में काम करना जरूरी है और उनके बीच में प्रिवेंटिव मोड में काम करना जरूरी है। सेकंड वन, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। जब तक हम इसको कम्युनिटी का प्रोग्राम नहीं बनाएंगे, हम अपने क्षेत्र को, अपने एरिया को, अपने बच्चों को नशे से बचा नहीं सकते। जो अभी भी बात की जा रही थी कि हम नशा मुक्त गांव की बात करने जा रहे हैं, नशा मुक्त पंचायत की बात करने जा रहे हैं, वो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के बिना नहीं हो सकता। अगला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। जब तक इस अभियान में कम्युनिटी की ओनरशिप नहीं आएगी, एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकल ओनरशिप नहीं आएगी, तब तक शायद हम नशा मुक्त पंचायत या नशा मुक्त गांव का सपना साकार नहीं कर पाएंगे। इस अभियान में ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग के ऊपर फोकस किया गया है। सर्विसेज को स्केल अप किया जा रहा है। ट्रीटमेंट सर्विसेज ऑलमोस्ट ओपीडी बेसिस पर हर ब्लॉक में इंश्योर करने की बात की जा रही है, और उसी के साथ यूथ इंटरवेंशन की बात की जा रही है। यूथ इंटरवेंशन में हम जो कॉलेज जाने वाला यूथ है उसके बीच में इंटरवेंशन कर रहे हैं, और जो युवा क्लब का यूथ है, यानी आउट ऑफ स्कूल आउट ऑफ कॉलेज यूथ है, उसके बीच में इंटरवेंशन प्लान करने की बात कर रहे हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग अपने आप में बहुत बड़ा कंपोनेंट है जिसके ऊपर हमारा काम हो रहा है। अगला, एनेबलिंग एनवायरनमेंट। जब तक हम समक्ष या समर्थ एनवायरनमेंट नहीं बनाएंगे, तब तक शायद हम नशा मुक्त पंचायत या नशा मुक्त गांव नहीं कर पाएंगे। स्कूल इंटरवेंशन को थोड़ा और फोकस करते हैं। स्कूल इंटरवेंशन में सारे ही स्कूलों, जिला में जितने भी स्कूल हैं, 6ठी से 12वीं क्लास की जहां पढ़ाई होती है, वहां सारे स्कूल में स्कूल टास्क फोर्स बनाई गई है, और हर स्कूल का एक एक टीचर को आइडेंटिफाई करके उनको मेंटर टीचर बनाया गया है, और इनको बाकायदा 2 दिन की ट्रेनिंग दी गई है। हर स्कूल से 2 बच्चों को पीयर लीडर बनाया गया है। हर स्कूल के जो बाकी टीचर्स हैं उनको भी ट्रेनिंग दी गई है, और सारे स्कूलों में जिस नवचेतना मॉड्यूल की बात की जा रही है, उस नवचेतना मॉड्यूल के ऊपर मेंटर टीचर को ट्रेंड किया गया है, और इस नवचेतना मॉड्यूल को ऊना जिला के सारे स्कूलों में अप्लाई कर दिया गया है। और इसी के साथ ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट ये है कि हम पीयर लेड, हम लाइफ स्किल एजुकेशन की बात भी कर रहे हैं थ्रू नवचेतना मॉड्यूल, लेकिन हम पीयर लेड इंटरवेंशन की बात भी कर रहे हैं, पीयर लेड एजुकेशन की बात भी कर रहे हैं। और उसके लिए हमने जो पीयर एजुकेटर आइडेंटिफाई किया है, उनकी जो कैपेसिटी स्ट्रेंथन की है, कैपेसिटी बिल्ड की है, उनके माध्यम से हर स्कूल में रेड क्रॉस क्लब्स बनाए गए हैं, उनके माध्यम से पीयर लेड एजुकेशन भी एम्पार्ट की जा रही है। पूरे जिला ऊना में तकरीबन 54,000 स्टूडेंट्स हैं, 287 स्कूल्स हैं, सारे ही सारे स्कूल्स में ये इंटरवेंशन इंप्लीमेंट की जा रही है। यूथ इंटरवेंशन की बात करते हैं, पूरे जिला ऊना में 51 कॉलेजेस हैं, जिनके बीच में जिनके एक टीचर को नोडल ऑफिसर बनाया गया है, और हर कॉलेज के 2 बच्चों को पीयर लीडर बनाया गया है। इन कॉलेजेस में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, और लाइफ स्किल एजुकेशन को लेकर डिफरेंट तरह के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है। जिला ऊना की सारी पंचायतों में पंचायत टास्क फोर्स बनाई गई है, और उस पंचायत टास्क फोर्स को इंक्लूड किया गया है आंगनबाड़ी वर्कर के साथ, और इंटीग्रेट किया गया है आंगनबाड़ी वर्कर के साथ, आशा वर्कर के साथ, जितनी भी एजेंसीज पंचायत में काम करती है उन सबके साथ। और तकरीबन इसमें 15 से 20 लोग हैं जो अपनी अपनी पंचायत में नशा मुक्त पंचायत की तरफ काम कर रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट काम ये है, अगर हम कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की बात करते हैं, जिला स्तर से लेकर बॉटम तक जितने भी कम्युनिटी से डील करने वाले डिपार्टमेंट है, उन सबको इंटरलिंक किया गया है, उनको मेन स्ट्रीम में लाया गया है। और ये मुद्दा केवल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मुद्दा नहीं है, बल्कि सारे ही डिपार्टमेंट्स को का मुद्दा बनाकर, इसको मेन स्ट्रीम का मुद्दा बनाकर कम्युनिटी के बीच में लाया जा रहा है। एक इंपॉर्टेंट काम जो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के अंडर हो रहा है, 2 तारीख को गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर हम हर घर दस्तक कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं। इस कैंपेन में पूरे जिला ऊना में 1,10,000 घर है, हर घर में अप्रोच किया जाएगा, दस्तक दी जाएगी, और जो हमारी हेल्पलाइन नंबर है और जो सर्विसेज अवेलेबल है जिला ऊना में डील करने के लिए, और खास करके हम पेरेंटिंग कैसे जिम्मेदार बना सकते हैं, उन सारी चीजों को लेकर हर घर में जाके एक ब्रोशर दिया जाएगा, स्टिकर दिया जाएगा, और हर घर में नॉक किया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट काम जो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के अंडर हो रहा है कि हर पंचायत में, हर गांव में नशा मुक्त जोन बनाए जा रहे हैं, ताकि एक कंड्यूसिव और एक एनेबल्ड एनवायरनमेंट हर पंचायत में बनाया जा सके। एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि स्कूल्स को तो हम स्कूल में कवर कर रहे हैं, जो विमेन्स है उनको घर में महिला मंडल के माध्यम से कवर कर रहे हैं, लेकिन जो उनको जो फादर हैं उनको वर्क प्लेस इंटरवेंशन के माध्यम से रीच करने की कोशिश की जा रही है, और उसको वर्क प्लेस इंटरवेंशन प्लान की गई है। वर्क प्लेस इंटरवेंशन सारी इंडस्ट्रीज में की जा रही है, सारे ऑफिसर्स में की जा रही है। ये अपने आप में एक बड़ा कैंपेन है जिसको जिला ऊना में इंप्लीमेंट किया जा रहा है विमेन्स के लिए, और उनको सेंसिटाइज करने के लिए अलग से जो महिला मंडल के रिप्रेजेंटेटिव है उनको ब्लॉक लेवल पर महिला शक्ति संवाद किए जा रहे हैं, और एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन भी लॉन्च की गई है, ताकि कोई क्वेरी हो या कोई सपोर्ट चाहिए उसको हम इंश्योर कर पाए। एनेबलिंग एनवायरनमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम यह है कि पूरे जिला ऊना में जो की पॉइंट्स हैं उसमें होर्डिंग लगाए गए हैं,
और सेल्फी पॉइंट फिक्स किए गए हैं, जहां खास करके जो प्लेग्राउंड्स होते हैं और इस तरह के जो की कॉन्ग्रीगेशन पॉइंट्स हैं, सो दैट यूथ में सेल्फी का बहुत क्रेज है और सेल्फी स्टैंड बनाए गए हैं। सेल्फी स्टैंड में जाके यूथ अपनी सेल्फी ले और नशे के लिए, नशा मुक्त अभियान के लिए अपनी सॉलिडेरिटी भी इंश्योर कर सकें। उसी के साथ जो पिक्चर में आपको नजर आ रहे हैं, ये मिस्टर अजय ठाकुर हैं। ये अर्जुन अवार्डी हैं, कबड्डी के बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं। अर्जुन अवार्डी ऊना जिला में ही पुलिस ऑफिसर हैं। ये अपना सिग्नेचर कैंपेन में और सेल्फी बूथ में अपनी पिक्चर लेके इस कैंपेन को लेके सॉलिडेरिटी, और इस तरह के हमने जिला ऊना के तकरीबन 100 की इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई किया है, और उनके मैसेजेस और उनका जो सॉलिडेरिटी इस कैंपेन के लिए हमने इंश्योर की है। साथ ही एनेबलिंग एनवायरनमेंट के लिए पोस्टर ऑफ द डे डेली किया जाता है, जिसमें जो मिथ्स और मिसकंसेप्शंस हैं वो हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज करते हैं। और साथ ही जो हैंड प्रिंट्स होते हैं उनकी मार्क के लिए अलग से कैंपेन है, रील कॉन्टेस्ट, सेल्फी चैलेंज, और इस तरह के काफी सारे कैंपेन है जो जिला ऊना में हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ट्रीटमेंट सर्विसेज को अपस्केल करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि हर ब्लॉक में तकरीबन 2 सेंटर हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जहां पर ओपीडी बेसिस पर ट्रीटमेंट सर्विसेज इंश्योर की जा रही हैं, और जो डॉक्टर और नर्सेज आइडेंटिफाई किए हैं उनको एम्स के माध्यम से ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि एक स्टैंडर्डाइज मैनर में हर एक इंडिविजुअल को ट्रेनिंग मिल सके। ये हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग का लोड है, तकरीबन 5000 एक इंडिविजुअल है जिनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, और उसमें टीचर्स से लेके हर डिपार्टमेंट के, पेयर लीडर से लेके हर डिपार्टमेंट के जो की पर्संस हैं, महिला मंडल, आशा वर्कर, सबको ट्रेन किया जा रहा है, ताकि नशे को लेके और नशे की प्राइमरी प्रिवेंशन को लेके सब में जो एक ओपिनियन है या स्किल है वो एट पार हो जाए, और हम रैशनल मैनर में, साइंटिफिक मैनर में नशा मुक्त ऊना और नशा मुक्त भारत अभियान में अपना रोल निभा सके। अगला कंपोनेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी कैंपेन को जमीन पर उतारने के लिए स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने एक बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव और सस्टेन्ड स्ट्रक्चर बनाया है कि अभियान ये 1 साल का, लेकिन ये मुद्दा कम्युनिटी का बनना चाहिए और कम्युनिटी इस मुद्दे को ओन करे, और उसके लिए स्ट्रक्चर बना हुआ इस तरह का स्ट्रक्चर है। जिला लेवल पर डीसी की अध्यक्षता में, जिसे हम डीएम कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में उनको डिप्टी कमिश्नर कहा जाता है, डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स कमेटी बनी है। ये डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स कमेटी हर महीने मिलती है, और जरूरत पड़ने पर रेगुलर बेसिस बीच में भी उसकी मुलाकात हो सकती है, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की जो मंथली मीटिंग होती है उसमें नशा मुक्त ऊना अभियान को लेकर जो जितने भी की पॉइंट्स हैं उसको लेकर स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, और हर इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर की जाती है। हर ब्लॉक लेवल पे एसडीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, और उसमें जो की डिपार्टमेंट्स हैं वो भी उसका पार्ट बने हैं, और ब्लॉक लेवल पर भी जो ब्लॉक टास्क फोर्स बनाई गई है उसकी हर महीने कमेटी होती है, उसमें भी पिछली एक्टिविटीज को रिव्यू किया जाता है और अगले महीने का प्लान किया जाता है। उसी तरह से हर स्कूल में स्कूल लेवल, जिसे हम एसटीएफ कहते हैं, स्कूल टास्क फोर्स कमेटी बनी है, प्रिंसिपल उसके चेयरमैन है, उसमें 2, 3, 4, 5 स्टूडेंट्स को भी इसका मेंबर बनाया गया है, टीचर को मेंबर बनाया गया है, कम्युनिटी के जो लीडिंग लोग हैं उनको भी इसका मेंबर बनाया गया है, और हर इंस्टीट्यूशन को भी हम ड्रग फ्री इंस्टीट्यूशन बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और सिमिलरली पंचायत टास्क फोर्स बनाई गई है, पंचायत टास्क फोर्स प्रधान की अध्यक्षता में है, और पंचायत के जो की पर्सन हैं और जो सीबीएस के लोग हैं, एनजीओ के लोगों को भी इसका पार्ट बनाया गया है, युवा क्लब को भी इसका पार्ट बनाया गया है। ये साइड में टेक्निकल सपोर्ट टीम है, जिसमें एसएलसी हिमाचल प्रदेश के लोग रहते हैं, हम लोग रहते हैं, और हम डे टू डे बेसिस पर टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं, और ये कैंपेन एक तरह का 24 आवर और बहुत ही मिशनरी मोड में इसको बढ़ाया जा रहा है। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, हम ट्विटर पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं, इंस्टाग्राम पे भी हैं, यूट्यूब पे भी हैं। हम सारे यंगस्टर्स को, क्योंकि हमने नोटिस किया जिस तरह की स्टडीज निकल के आई हैं, सोशल मीडिया अपने आप में मेन स्ट्रीम मीडिया बनकर निकल आया है आजकल। और जब हम सोशल मीडिया की सबसे बड़ी ताकत है कि हमारी बात रैशनल मैनर में, साइंटिफिक मैनर में, और जो हम बात करना चाहते हैं सीधा एक इंडिविजुअल और टारगेट पॉपुलेशन तक हम लेके जा सकते हैं। और हमारी टारगेट पॉपुलेशन जो है वो यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स हैं, स्कूल और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं। ये अच्छी बात भी है कि सारे ज्यादातर स्टूडेंट हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं, और हम सोशल मीडिया को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं अल्टरनेट मीडिया के रूप में, और मिथ्स और मिसकंसेप्शंस को एड्रेस करने के लिए और अपने कैंपेन को मेन स्ट्रीम कैंपेन बनाने के लिए। ये हमारी हेल्पलाइन लाइन है 9418064444। इसके ऊपर ये 24 घंटे हेल्पलाइन लाइन है, और ऊना जिला की सारी क्वेरीज को एड्रेस करने के लिए जिम्मेदार है। ये हमारा नशा मुक्त ऊना अभियान का एक सिनॉप्सिस था आपके सामने, आपकी गाइडेंस के लिए हम तैयार हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। Thank you so much, sir, for such an insightful and informative presentation. I think हिमाचल प्रदेश में इस चीज़ की, हिमाचल प्रदेश में नहीं केवल कि ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स में इस चीज़ की ऐसे एक इनिशिएटिव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली जो आपने एक लोकेशन स्पेसिफिक जो जैसे सर्वे करवाया, and then you are basically implementing the Abhiyaan tailored to the requirements and specificities of that particular location. So I think that is very much commendable.
एंड ऑल्सो आपने जैसे इंटीग्रेशन करवाया आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ एंड अदर ग्राउंड लेवल वर्कर्स के साथ एंड ऑल्सो I also like your focus on the aspect of responsible parenting. I think substance use as a substance use can be tackled a lot to a great extent if we start focusing on this particular issue. Like बच्चे basically जब छोटे होते हैं तभी से शुरुआत से अगर हम उनकी ऐसे कंडीशनिंग करें ऐसे लाइक उनको सीख दें कि वो इस चीज की तरफ ना ही जाए they don't start gravitating towards this issue at all. I think उसका भी काफी ज्यादा असर होगा इस चीज पे in the fight against substance use. Thank you so much again, sir, for for this presentation. Moving on, our next speaker is Miss Anamriya Barua. She is the state coordinator. She is the project coordinator for Committee on Socio-Economic and Health Development Assam, which is the SLCA for Assam and Meghalaya. So over to you, ma'am. Thank you. Hi everyone. My name is Anamriya Barua. I'm already being introduced by Rehan. So I'm the project coordinator of SLC Assam and Meghalaya. From our side, for the Nasha Mukt Bharat Abhiyaan, we have started to create as much as awareness we can, and also capacity building training programs, not only for the GI organizations, but also organizations who are working on drug de-addiction, but not GI organizations. And moreover, as we all know, that it's not only the work of the social justice and empowerment, the Department of Social Justice and Empowerment, to implement the Nasha Mukt Bharat Abhiyaan as a whole. It's a very big task. So what we do is we make linkages with the other departments as well, such as the Department of Health, the Education Department, the Paramilitary Department. So we create linkages with them, and we also organize the Nasha Mukt Bharat, as we have the committee. We also have meetings with the district administration, and during those meetings we create a list of the vulnerable villages in those districts, and the list of the schools and colleges within their district, and also the hospitals, where we can also give training to the doctors as well. It's not only the psychiatrists, but also the doctors who are treating other problem as well, so that if they come in contact with someone who is using substances, and immediate what they have steps they have to do. So we are training them as well under the initiative of the district as well. And moreover, from SLC Assam and Meghalaya, based on this, we have also been organizing different training programs for the nurses as well, nurses of not the service providing organizations like the IRCAs and DDAC, but also uh, the district de-addiction centers of the state government as well. We are providing trainings to the nurses as well of those organizations, and also we are giving trainings to the counselors of the private rehabs in Assam and Meghalaya, so that they can be trained in a proper way, and they can get the basics of what counseling is. Because as we see most of the private rehabs, we see the peer educators who are working, the recovering people are working as counselors in most of the private rehabs. So what we do is we are engaging them, and we are trying to train them in the counseling theme of what are the main basic principles of counseling, what are the techniques which they can use by bringing in different resource person from our side. And we are also we are also creating linkages with the different colleges and schools. So what we have done is, we can say, an approach which we have taken up is, we have started forming student forums in the different uh, institutions and the schools, like not only the main colleges which are famous in Assam and Meghalaya, like the USM and Guwahati University. We have also formed student forum in the interior districts as well. Like in Tinsukia district, we have a town named Dumnuma. So we have formed student forum over there in Dumnuma College. We have formed student forum in Mondia is a place in Borpeta side. So we have formed student forum in Mondia district as well. We are trying to reach out to the interior parts as well. And as you all know, in case of Assam, Assam is a very well-known state for tea population. So we have tea gardens. So what we are doing is, right now we are linking with the tea community as well, because over there the
increase of the use of alcohol is more as compared to the other parts where within the tea community. So we are making linkages with them so that we can create more awareness amongst them, and also link them to the nearest civil hospitals just in case they require immediate treatment. And from SLCA side, what we are doing, we can say that from the outreach side, we have ODICs in Assam as well, in Meghalaya as well. So what we do is, in the hotspot areas when they go, we also link with them and we try to create awareness along with the ODIC project, ODIC staffs as well. And another thing which we are doing is, we are also linking the CPLI projects as well, where the early prevention project has been carried out. So what we do is, we organize focus group discussion amongst them in those areas. To It's not only the children who should be aware about it, it's also the parents. Like our previous panelists, we have also informed about the importance of parents knowing what is important, what their own children are doing. It's very important. So we try to create awareness on those topics as well. And for Navchetna model, which the ministry have taken up, since we have already been aware of what Navchetna is and what are the specific main topics which are being taken up, so we address to those topics while we do awareness in the schools and colleges. In fact, also we use such these important topics, mainly importance of recognizing your anger and importance of knowing your emotion, and also on violence, because at this stage for the young kids is very important, because these are the reasons why people usually go into the use of substances. So we are taking this initiative, we are collaborating this and linkaging with those colleges and schools which are where the vulnerable kids are, and we try to create awareness over there. And we have also tried to reach out to the high risk population, mainly in Assam and Meghalaya. In Meghalaya, we can say that the GIAs who are working over there, they're working in a vast way. In Assam, we are trying to monitor, we are trying to help those GIAs so that they could take initiatives more properly and carry out these projects. So, what we do is, in the vulnerable areas, we not only focus with the women, with the children, we also focus with the workers over there, like the truck drivers, like the city bus drivers. Recently, we had done trainings with the city bus drivers where we got to know about, out of those people, almost 60% of them are using drugs. It's not only alcohol which they're using drugs as well, mainly heroin. And day by day, we can see that heroin drug users are increasing. So we are planning to do a survey with the district administration, and we would also approach the state administration. If they can take an initiative, we would collaborate with them and we would try to do a research with them in what is going on in Assam and Meghalaya, apart from the data which we have from the external pattern of substance use in India. And lastly, I would like to say that from another initiative thing which we are, innovative thing which we are thinking of is making village free, drug free villages in Assam and Meghalaya. So right now we are linkaging with since we are linkaging with the tea gardens right now, so we are trying to create a drug free village in the tea gardens in Upper Assam. So right now we are working in Jorhat district. So we will try to create more and more drug-free villages as a step forward to making a Nasha Mukt Bharat. And I would also like to say, if I have to give some suggestion on what steps we can do, I always encourage the students to create a hashtag uh, campaign for Nasha Mukt Bharat. We also request them to tag Nasha Mukt Bharat page. Also, we try to ask them to try. Suppose we have a district in Nalbari, so we did an awareness in Nalbari College. So what we encourage them to do is hashtag Nasha Mukt Bharat Nalbari College, or hashtag Nasha Mukt Bharat Nalbari. So what we do is we always encourage them to take an initiative from their side as well. And if they need any help, SLC is always there to guide them and to help them in this, because we can know almost 90% of the youth are engaged in social media. In fact, we are all youths, like Rihan, me, we are all of the youths. So we all of us have Twitter, we have Instagram, Facebook, and right now
Instagram is very trending, and this hashtag campaigns are still going on. So we encourage them in doing this. And I would also suggest that other SLCAs and GIAs should also encourage those uh, participants who are there for you, and all the population whom you are reaching. You should encourage them to do a social media campaign and try a hashtag campaign, so that it could be we can create the awareness more and more in a vast way. And we have also encouraged the district administrations, like in Assam, in the Nasha Mukt Bharat 2.0, there were only 15 vulnerable districts, and now for Assam all the 35 districts have been recognized, and in Meghalaya we have 4 districts which are vulnerable. So we are right now working with the district administration so that we could do a program which is not only like rallies, or not only like holding the hoardings of Nasha Mukt Bharat in the places, but also we can do a vast program which will be for 15 days program, a workshop program including children's. We can create art competition so that people are aware about it more and more. And we should also include not only the students but also the parents as well. So from my side, I have all this to say. Thanking you. Thank you for inviting me for this. Thank you so much, ma'am. I think, again, coming back to the issue of involving parents in the entire discourse around substance use, I think it's also important to focus not just on the youth, but also their parents, because after all, the conditioning and the upbringing of that youth is being done by the parents. So I think it's very much important that we also impart the kind of sensitization to the parents, to the parents as well. So I'm glad that your organization is also focusing on this aspect. So thank you so much for your presentation. Next up, we will be moving to our third panelist, which is Ms. Manisha Sharma from Sankalp Sanskritik Samiti, which is the SLCA for Chhattisgarh. Good afternoon, ma'am. I'm really glad to have you on this panel. The panel is yours. Yeah, thank you so much, and thanks for inviting us to give our views on Nasha Mukt Bharat. As per the pointers given to us, I have prepared a small presentation which I'll be sharing with you all. Just go. Just go. Entire screen. We have a slideshow. Sorry for the delay. That is fine, ma'am. That is fine. It's not an issue. अभी तक क्या ये 15 सेकंड 20 सेकंड पीछे चल रहा है. Is it visible? Ma'am, in case you are not able to display the presentation, I also happen to have your presentation, right? Yeah. So if you want, I can display the Yeah. presentation. Please, if you can. Okay, just give me a moment. Creative. Just give me a moment, ma'am. Yeah. Ma'am, is the screen visible? Is your presentation visible? The next screen, in the next slide, please. Yeah. So as per the pointers, suggestions for implementation, as we have reached up to the, Panchayati Raj, to the village level. So the Sarpanch, they are saying, since we don't have any letter from the government or we don't have any information
so will not be able to work into this Nasha Mukt Bharat Abhiyaan. So if the government takes an initiative and have a tie-up with the Panchayati Raj, so it will be good to train all the sarpanch in the villages. So at one go, we will be able to reach the entire villages, the panchayats. So this is one suggestion to cover the state in less time with more effective approach. Because since we have worked into, we have 70% of the area covered with the jungle and have the tribal area more, and also the Naxalite areas wherein the sarpanch are more active, so it becomes very difficult for us to reach to that areas. And if the sarpanch takes the initiative, then it will be more effective. This is what the suggestion we have for an MBA. There are 33 districts in our state, wherein we have only 2 IRCAs, 3 ODIC, and 1 CPLI. No DDSA. So imagine that how effective it will be to walk into such a huge district, being into capital. So we as an SLCA had approached many district collectors to support for DDSE, so that we can motivate them to open into the districts, but they all said that this is not our priority. In that case, our second option was to do a kind of network and advocacy with the state government social welfare department, and we were able to motivate them to start into few districts the rehabilitation center, 15 bedded, and we have in 7 with the support of the state government. The GOI with a special reference to SLCA, if they can send a letter to the state government, because now what is happening, since a letter has already come from GOI for Nasha Mukt Bharat Abhiyaan to the districts, and even the financial support is being given, I assure that none of the amount is used and they are not taking any interest. And even the letter mentions that the SLCA has to be a member of the committee. They refused and they have taken the person whom they knew very well or the person who is approachable. So we even are not the member of the committee. So again, it is a big challenge for us how to. We have done a lot of follow up to them. We have also given the letter, we have approached them, but again they say ki, no, we have nominated some other person in the committee, so there is no role of SLC into it. So again it becomes a big challenge for us to successful and a wider way to implement an MBA in our state. I myself had gone to SCERT for now Chetna module 2-3 times. We motivated them to have a meeting to initiate for now Chetna. Their response in the follow up was no, previous slide, please. Yeah, their no, previous, the second slide. Their response was that we have made a budget and given to Government of India, MSJE, but we did not get any sanction of the budget, so we have not implemented now Chetna. So again, a request will be from MSJE that a letter should be, given to the state government and to different departments for the better implementation of the project. The next slide is hand-holding support from NISD for SLCA. If we are stuck to some point, we need someone for the guidance that, look, we are having this problem in the state, and if you initiate, the problem will be resolved. I remember very well Mr. Siju George, he came, other representative from NISD came.
They had a meeting with the state government and the district, collectors and all, but nothing worked for NMBA. They say it is not our priority. So to bring it into their priority, we need a kind of support, a letter or some, conversation between the officials or the ministers to successfully implement it in our state. Then 33 districts and only 4 staff is really very inappropriate to reach to. Suppose I want to go to Narayanpur. I had gone 2-3 times when the collector invited for an MBA. So to reach Narayanpur, it takes around 7 to 8 hours by bus and come back again 7 to 8 hours. So the distance, in the state is so far, reaching to other district or a block, it becomes very difficult when you have very few staff in SLCA. Then also the SLCA staff, they need a kind of capacity building constant and continuously, so they get motivated, they are strengthened for it. Online training is not that effective as it is in person when you go. So capacity building of SLCA staff is needed. Then advocacy and networking cost is not included in SLCA. Wherein if you see the role of SLCA, advocacy and networking is the pinpoint basic objective of SLCA, wherein it is not mentioned in the budget. So it becomes very difficult when you want to go for advocacy or networking with anyone in the state. Next is IEC material has got very less cost in the budget of SLCA. And when you want to reach to a wider area, when the state government or district administration is not helping you out, so you need more budget into IEC. I'm sorry mentioning the cost and the budget mentioning, but that is the problem we are, as SLCA, we are facing. So this is what I have already mentioned about, Nasha Mukt Bharat Abhiyaan. We have met the Social Welfare Department, Chhattisgarh government, for the uh, uh, addiction solution awareness and social rehabilitation. So this problem we are already facing here in the state. But then we were successful for getting at least rehabilitation centers in 7 of the districts at state level. We were a part of national level module writing related to drug eradication for students by State Council of Education Research and Training of Chhattisgarh, and this has come into their books of the students in the schools, and we were a part, and we have given so much of input for school module writing. We are the member of state at Purna Sharab Bandi. This is the one point of the manifesto of Congress when they were fighting elections. So this has come into the policy making, wherein we are a member in the admin committee at state level for Purna Sharab Bandi. We were invited to train the officials of Social Welfare Department by Chhattisgarh Administrative Academy. So whenever any kind of training takes place in Chhattisgarh Administration Academy, we go there as a resource person. We were invited as trainers to train the officials of excise department in the perspective of de-addiction. So this excise officer who are newly appointed whenever, so we go as a resource person to train them. We did advocacy with social welfare department, and we are also supporting social welfare department regarding NMBA. So whenever it comes to Nasha Mukt, the word Nasha Mukt, we are the key person for the district and state department who wants us to be there
because honestly speaking, the organization is 34 years old and we started working in this sector in 2000, and we were the first to initiate this in the state. And after us, the other one person has come, and only Gayatri Parivar is working into this sector. If you find other organization who are interested, they will say no to de-addiction rehabilitation or this kind of work. Then three IAS officers who were under provision visited SLCA to learn about drug abuse prevention programs under the training from the Chhattisgarh Administrative Academy. They have sent to us, and we have given the information about all the programs, whatever is being run under NMBA. um, and we also see our focus is more into the tribal area. Why? Because our state is coming on the top for alcohol and tobacco. These are the two. The policy of the government is to keep 5 liters of liquor at home. There is no issue. So this is the policy. And being into the tribal area, the people are so fond of alcoholism, mahua and tadi, and not 5 liters. See, when it comes to mahua and tadi, they keep a lot of alcohol. They also make alcohol out of rice, so it's very easy for them to consume it and be drunken and sleep at home, and the women are at work. So again, we have organized, taking the support of Narayanpur, this most sensitive next slide area. We approached the universities and the colleges. We requested them to have a online, training program for the volunteers and SS students. So they joined us from all over the state, and we requested the joint secretary, so she said the under secretary to be a spokesperson into it. And 1500 students they registered, but only 760 men were able to join it. And now they are working very well at Narayanpur district, especially if I speak about NMBA. So we were also asked by the collector to start a rehabilitation center there, but we didn't find even a single building there which is appropriate to run a rehabilitation center. The rooms are very small. Also speaking about DDAC, the kind of building, kind of square feet is needed, not available at any of the districts, which are very small. Hardly you walk for an hour and the district is covered. So small districts are there. So sometimes we find it very difficult to motivate other NGOs or the collector to come forward for DDAC. And until and unless we reach to all the districts, this NMBA will become very difficult in Chhattisgarh state as of now, I can tell you. Government, non-government institution, organizations, they regularly visit SLCA and learn about NMBA for organizing this program into their department. 3 days a camp was organized. This was the pilot basis we initiated in the village, which is nearby Raipur. So the entire staff of ODIC, CPLI, IRCA and SLCA, they stayed at one place, the village, and they initiated for 3 days with all the activities whichever was possible: awareness, rally, street play, community meeting, mapping. And now this village is Nasha Mukt village. So this was the very first time the Sarpanch, he has provided a school campus for them to stay, and they provided food in different houses to the staff, and they stayed completely 3 days to see what will be the effect. So we are so
happy that ever find the Naras coming to the so the pilot basis did and it was successful. So we are planning more villages in future to do the same. Closely working with the police as Hello Zindagi. So past days we have worked, the entire staff run with them, and we have covered a lot of institutions and organizations for Hello Zindagi program with the police department. Also training and supporting the de-addiction centers of the state here. We are also going to different colleges and schools and reaching and doing a kind of awareness with the students and teachers for the harmful impact of drugs, and also making volunteers from universities and schools. Also would like to let you know, last year we have completed one school as Nasha School, and the story was covered by Danik Bhaskar in the state. So that was the first school in the state to be Nasha Mukt school. So after initiating, we also planning to the schools and universities to make them Nasha Mukt. Different colleges and schools are reached to aware students and teachers for this. NSS, NYK, and NCC group are the volunteers for us for NMBA. So our focus is more into the youths and children of the state. We have signed MOU with Sri Rawatpura University. So these students will be doing awareness. They will turns to us and will also go to nearby villages of their adjourned villages to do an MBA program. So MOU has been signed with Sri Rawatpura. A circular from State Nodal Officer of State National Services Scheme has been circulated to all of the 23 numbers. The women self-help group are 2,923. This women we have trained for doing the awareness program for Nasha. They are appointed by the state government and called as Nasha Mukt Bharat Abhiyaan here in the state. And as you know, our state is very well known for women's self-help group. Kalinga University, the South African students, they have become the interns and they are working for Nasha Mukt Bharat. In the university and nearby the places. We are so far, around 30 kilometers or 25 kilometers away from the capital city. So they are taking care of their nearby places. So I think completed. This was the last. Yeah. So and regularly we do non-budgeted activities for awareness and training in all the universities, colleges. Junior doctors of AIMS, they come here to understand what is de-addiction and how it works and what is the strategy we adopt for every year. Doctors, they come in, so entertain all these students who are who become the intern for 1 month for Nasha Mukt Bharat Abhiyaan from all the universities and colleges. Not only MSW school students, NMBA, MSW, LLB students, and clinical psychological students, they come as interns for 1 month, and
learn the process here, and that is very helpful for their career. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for this extended presentation. Uh, we are running a bit over time, so I would like to just call upon our fourth and final panelist, Mr. Amar Singh from Sister Nivedita Memorial Trust, which is the SLCA for Bihar and Jharkhand. Thank you. Good morning, ladies and gentlemen. Am I audible? Yes, sir, you're audible. Sir, as we are running a bit late, so I would just request you to keep the presentation a bit brief. ओके रेहान जी, मैं बस शॉर्ट में ही बोलता हूँ, ज़्यादा नहीं समझ लूँगा मैं। थैंक यू। मेरा नाम अमर सिंह हुआ, ऐसे रेहान जी ने बता ही दिया। हम लोग नशा मुक्ति के क्षेत्र में 1993 से हम लोग काम कर रहे हैं और ये पटना में मेरा सेंटर चल रहा है। इसके अलावा SLCA एज ए वी हैव सेलेक्टेड ऑन मार्च अप्रैल 20। उस समय से हमने SLCA हम रन कर रहे हैं और अगस्त 2020 में जब ये NMBA का लॉन्चिंग हुआ तो हमें बहुत ही खुशी हुई कि ये अब लगता है कि ये सही मायने में अब हमारा नशा मुक्त भारत का जो एक सपना है शायद पूरा हो पाएगा। हम लोग तो ऐसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं पिछले कई सालों से और हमारे आदरणीय पैनलिस्ट लोग भी चला रहे होंगे, वो जान रहे होंगे कि केयर सपोर्ट और केयर सर्विस से ज़्यादा जरूरी प्रिवेंशन करना है। अवेयरनेस जनरेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स। तो इस लिहाज से ये जो एक्टिविटी शुरू हुई हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ये एक बहुत ही सराहनीय प्रयास रहा है जो अभी चलेगा और उम्मीद करते हैं कि हम लोग बहुत जल्द नशा मुक्त भारत अभियान के टारगेट को शायद पूरा कर पाएँ। लेकिन अब जैसा कि है कि हमें अपना इनपुट्स देना है, कुछ सजेशन देना है, तो पहले हम अपना इनपुट्स देना चाहेंगे कि हमने अंदर NMBA क्या क्या काम किया। पहले स्कूल के बारे में बताना चाहूँगा कि हमने बिहार और झारखंड के गवर्नमेंट स्कूलों को अप्रोच किया, प्राइवेट स्कूलों को अप्रोच किया, रिमोट एरिया में गए, वैसे एरिया के स्कूलों को सिलेक्शन किया जहाँ के आसपास के एरिया बनलगुर एरियाज़ हैं, HRGs का वहाँ एग्जिस्टेंस ज़्यादा है। उन जगहों पे जाके हमने स्कूलों में नवचेतना मॉडल पर हमने प्रोग्राम किया। इस प्रोग्राम के तहत हमने लगभग मोर देन 5000 बच्चों को अवेयर किया, डिबेट्स करवाया, ड्राइंग कंपटीशन करवाया और लोगों को जागरूक किया। इसमें स्कूल्स के टीचर्स, प्रिंसिपल, नॉन टीचिंग स्टाफ ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। स्कूलों में काम करने में हमें कहीं कोई परेशानी नहीं हुई, सिर्फ परेशानी समय का हुआ। कहीं एग्ज़ाम हो जाता था, कहीं पर कुछ शेड्यूल हो जाता था, तो वो सिर्फ परेशानी हुई। बाकी हमें हर जगह लोगों ने बहुत ही अच्छे सपोर्ट किया। हमारे SLCAs के जो भी स्टाफ हैं, जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स थे, तो बहुत ही अच्छे तरीके से जाके वहाँ के हेड्स को बताते थे कि व्हाट इज़ द NMBA, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी इम्प्लीमेंट इन आवर डिस्ट्रिक्ट्स, आवर स्कूल्स, आवर कम्युनिटी, आवर नियर बाई एरिया। तो वो सारी चीज़ों को समझते थे और बेझिझक वो हमें मदद करते थे। इसके बाद हम आते हैं कॉलेजेस में। कॉलेजेस में भी हम लोगों ने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया। जितने भी कॉलेजेस में गए, दरभंगा यूनिवर्सिटी में गए, पटना यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेजों में किया, तो वहाँ भी लोगों ने अच्छा मदद किया। NCC और के कैडेट्स को हम लोगों ने ट्रेंड किया। ये कमांड डिफेंस व्हाट हैपेंड, तो NCC कैडेट्स के साथ मिलकर हमने रैलीज भी की, अवेयरनेस प्रोग्राम किया। उनके कैडेट्स को बुला के हमने एज ए मास्टर वॉलंटियर ट्रेंड किया। अब आते हैं कम्युनिटी में। कम्युनिटी में हमने जनरल पीपुल के बीच में नुक्कड़ नाटक के जरिए हमने NMBA के मैसेज को देने की कोशिश की, लेक्चर सेशन भी किया। कुछ गैप भी हुए, कुछ चैलेंजेस भी आए। कुछ कम्युनिटी में हम लोग गए, क्योंकि बिहार के आपको जैसा कि पता होगा कि अल्कोहल प्रोहिबिशन स्टेट है, बट कहना नहीं चाहिए, बट फिर भी यहाँ पर वो प्रैक्टिसेस चली रही है। तो एक 2-3 लोग आए वहाँ के लोकल पीपुल और कहने लगे
क्या आप लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, यहाँ तो नीतीश कुमार नशा मुक्त कर दिए हैं, पर यहाँ नशे तो डोर टू डोर सर्विस हो रही है, क्या इससे क्या फायदा है आपको। और वो कुछ अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स का यूज करने लगे, वायलेंट भी हो गए थे। बट वहाँ के लोकल कम्युनिटी पीपल ने फिर समझाया बुझाया, हमें तो लगा कि साथ पैकअप करके वापस भागना होगा। वो आरा जिला की बात है, भोजपुर जिले की बात है। बट इस तरह की भी कभी कभी हमें फेसेस करने पड़े कम्युनिटी में। बट due to support of local stakeholders, some key influence people, we handle all these situations. अब मैं बात करूंगा ये कुछ इनोवेटिव वर्क की। तो हमने इनोवेटिव वर्क में जैसे पटना बिहार में कुछ प्राइवेट डी एडिक्शन सेंटर्स भी चल रहे हैं, तो उनके यहाँ जाके हमने NMBA पे प्रोग्राम लिया, वहाँ के सर्विस प्रोवाइडर्स को ट्रेन किया। इसके अलावा चिमनी वर्कर्स, जो रिमोट एरिया में चिमनी वर्कर्स होते हैं, ईट भट्टा जो उनके ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वहाँ हमने जाके उन्हें अवेयर किया। ट्रांसपोर्ट वर्कर्स को अवेयर किया हमने। फिर पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो क्लीनिंग स्टाफ होते हैं, लो ग्रेड पीपल्स होते हैं, उनको हमने अवेयर किया। क्योंकि वो लोग जो है बहुत ही जो हमारे यहाँ कहा जाता है पाउच कहा जाता है, अल्कोहल का जो सबसे खराब रूप होता है, मिक्स करके जो बनता है, देसी देसी कहा जाता है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो होता है पाउच, वो यूज करते हैं। बहुत ज़्यादा उन्हें परेशानी होती है। उन लोगों के बीच में जाके हमने जब किया प्रोग्राम क्लीनिंग स्टाफ के बीच में, तो वो लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हुए। और उनके जो मेन हेड थे HR से मिला तो कहा कि नहीं, इस तरह का प्रोग्राम हमेशा करते रहिए, बीच बीच में आइए कीजिए। उन्होंने अगर दूसरे यूनिट वाले को कहा कि भैया ये SLCA वाले हैं, आप जाओ उनके साथ मिलके अवेयर कराओ, क्योंकि ये बहुत ही मेजर इशू हो गया है लो लेवल पीपल के बीच में। इसके अलावा हमने रेड लाइट एरिया मुजफ्फरपुर, वहाँ पे जाके जो वहाँ के लोकल स्टेक होल्डर्स हैं, जो वहाँ की लीडर्स होती हैं, जो भी हैं, उनके साथ भी मिलकर हम लोगों ने NMBA रिलेटेड कैंपेनिंग किया। और they have also taken in interested in all these things. हम लोग वहाँ के नगर निगम अधिकारी मिलकर हमने बैठक की, और उन्होंने भी हमें एश्योरेंस दिया कि आप हमेशा आते रहिए, यहाँ ये बहुत समस्या बढ़ती चली जा रही है। तो ये सब हमारा कुछ हल्का छोटा इनिशिएटिव है जो हम लोग कर रहे हैं, और आगे भी करते जाएंगे। अब हम आते हैं NMBA नहीं है, बारे में बातें होती रहती हैं। जहाँ जो मदद होते हैं हम लोग तुरंत विदिन सेकेंड हम लोग करते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है। इवन कि NMBA डिस्ट्रिक्ट वाले जो वॉलंटियर ट्रेनिंग प्रोवाइडर एरिया में, भोजपुर में और झारखंड में भी हम लोग बुलाया था। एक्शन प्लान है NMBA का, उसके अंतर्गत हमने 5 दिन उनके द्वारा बताए गए स्कूलों में जाके हम लोगों ने ट्रेनिंग और सेशंस हमने लिए। तो NMBA डिस्ट्रिक्ट में हमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बातों को अब विराम देना चाहता हूँ, क्योंकि शायद समय की कमी है। मैंने प्रेजेंटेशन नहीं बनाया, मैंने सोचा कि चलो डायरेक्ट दिल से बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, है ना। हेलो जी सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। और एक बात है, हमने कहना चाहेंगे, एक जी सर। सजेशन है मात्र। हाँ, हेलो हेलो सर, आपकी शायद आवाज नहीं आ रही है सर। हाँ, बोला जाए। हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ, बोलिए। आप कुछ बोल रहे थे सर, सजेशन। हेलो। हाँ, मैं सजेशन यही कहना है, जैसे कि थोड़ा सा मिनिस्ट्री लेवल पे, जैसे कि वो लोग कहते हैं कि आप लोग मिलोगे तो रैपो बनेगा, तो वो तो हम करें। एक उनके तरफ से
कुछ और ऐसा आइडेंटिटी कार्ड या कुछ ऐसा लेटर और आ जाए कि यू हैव टू सपोर्ट देम, तो हमें लगता है कि चूंकि हम लोग को परेशानी हुई फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा कि मुझे चिट्ठी मिले नहीं मिले, लेटर मिले नहीं मिले, मैं जाऊंगा, मिलूंगा, बाबा मिलूंगा, कितने बार मुझे वापस करेंगे वो। और इस वजह से हमारे रैपो बनने में कुछ हद तक सफलता मिली है। और लगभग झारखंड के मोर देन, जान तो सब रहे हैं कि आज SLC हैं, मेंबर बनाए गए हैं, मीटिंग में भी मैं गया हूँ, हमारे लोग गए हैं, बट और थोड़ा सा जरूरत है उनके साथ रैपो बनने की। हो जाएगी तो फिर नशा मुक्त भारत अभियान सफल होने में कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा दो समय लगेगा, क्योंकि हमारे जितने भी रिस्पेक्टेड SLCs हैं, पुराने लोग हैं, उनसे भी हमें सीखने को मौका मलेगा, क्योंकि वी आर ओनली 2 year old, बट हमको सीखना है। वी आर ऑल्सो इन लर्निंग प्रोसेस, some things which we have saw during the presentation of other panelists, we have also learned something which we are going to implement. Thank you. Jai Hind. Thank you so much, sir. Especially आपके for your tireless efforts in spite of all. इतनी सारी दिक्कतें हुई हैं आपको फील्ड में, और मैं भी काफ़ी सारी टाइम पे मैं पर्सनली कह सकता हूँ कि लाइक आई हैव आल्सो कोलैबोरेटेड विद यू ऑन मल्टीपल ओकेशंस एंड Yes, रेहान सर, आपका it's बहुत बड़ा truly सपोर्ट रहा है, आपने बहुत मदद किया है, इसके लिए थैंक यू। आगे भी आपका सपोर्ट चाहिए हमें। so क्योंकि हम थोड़ा टाइम हमारा ओवर चल रहा है, we are bit late, so I would just like to conclude the panel discussion. So in closing, I would like to extend my heartfelt gratitude to all our esteemed panelists who have enriched our discussion. Your insights have illuminated the path towards a brighter future, one free from the shadows of substance use. And as we reflect on the power of collaborative partnerships, let us remember that the strength of our collective efforts far outweighs the challenges we face. The journey to our Nasha Mukt Bharat is a collective endeavor, requiring the active engagement of civil society organizations, government bodies, and every citizen committed to positive change. So, with this, we wrap up our panel today, and I would like to once again thank everyone for joining us. We have exciting events lined up for the entire month of June and July. To learn more about drug demand reduction, in the coming weeks, we have a number of webinars on the topic dance movement therapy, career counseling, and so on. So stay safe and stay healthy. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you.